Namaskar, welcome and Radhe Radhe to all. I am Disha and this is your class 10th IT class. In the last two sessions, we have completed more than topics of this chapter, that is Unit 1 Communication Skill and Chapter 1 Methods of Communication. So in this video, we will start the two topics, small group communication, public group communication, and some types of verbal, non-verbal communication. So let's start. We will finish whole chapter in this video, and from the next video, we will start our two chapter of Unit 1. So we are having our four topics in this chapter. Firstly, we are going to be discuss the small group communication. What is the small group communication? As it telling by your name that small group communication. When there is a small group, when we are talking to each other, just like your school project. When we are working on any project, what we do? We make group A, group B, group C, in which 4, 5, 6 people or 6 students are involved. We are discussing with each other. What is your opinion? What is your idea? What is your concepts? What is your way to represent it? This is known as the small group communication, where the student, the teacher, the faculty, and any people can take praise. What are the advantages of small group communication? Small group communication give you more ideas, make you more creative than you are independently. Means जब हम अकेले किसी चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो वी आर वर्किंग इन अवर ओन आइडियाज. हम हमारे खुद के आइडियाज पे काम करते हैं, हम हमारे खुद के आइडियाज पे वर्क करते हैं. बट व्हेन वी आर इन द ग्रुप, वी आर ट्राइंग दैट we are listening this one also, and listening this one also. So what is happening? We are getting many ideas, and as many as ideas, as much as we are creative. This is the advantages of small group communication. Also, small group communication make you more confident. When you are alone, when you are independent, what we do, we just take ideas and just work on it, and that's it. When we are having the number of people who are giving us ideas, who are giving us many ways to represent it, so what we feel confident. Take one example. When we are representing something, that can be related to a motivational thought, that can be related to a speech, that can be related to content of your book. When we are represented alone, we are less unconfident, because there's no one who can motivate us, who can cheers us. When there are our family member, there are our faculty, there are our friends, we are feel more confident, because वो वहाँ है, वो हमें cheer कर रहा है, वो हमें motivate कर रहा है. तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए कॉन्फिडेंस देता है. स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में हो सकता है कि हमारे पास लेस आइडियाज़ हो, पर क्रिएटिव हम ज़्यादा होते हैं, और हमें मोटिवेट करने वाले हमारे आसपास क्या होते हैं, हमारे सराउंडिंग में ज़्यादा पीपल होते हैं. बट डिसएडवांटेज क्या है स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन का? जैसे कि हमें पता है कि किसी भी चीज़ के एडवांटेज होते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं उसके कोन्स निकल आते हैं. मीन्स प्रोज होंगे तो कोन्स भी होंगे, मेरिट्स होंगे, डिमेरिट्स भी होंगे, एडवांटेज होंगे तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे. तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ small group communication? It takes a lot of time, it takes a lot of energy from the one people who are giving the idea. कोई एक पर्सन अगर अपना आइडिया दे रहा है, तो हमें उसका भी, उस पर्सन को भी उसका आइडिया सुनने के लिए उतना टाइम देना पड़ेगा जितना हम सेकंड पर्सन को दे रहे हैं. तो इफ वी आर हैविंग द 5 member in one group, or one member is taking 1 hour to represent their idea, then it will take the 5 hours to complete your project, to complete your idea, to listen that one person, or listen that 1, 2%, 3%, 4 or 5%. So this is time taken, and a lot of energy is wasted in this. And sometimes our ideas can be vary. हो सकता है कि हमारे थॉट्स कुछ और हैं और उनके थॉट्स क्या हो, कुछ और हो. पॉसिबिलिटीज होती हैं. जब हम ग्रुप में कन्वर्सेशन करते हैं तो क्या होते हैं, किसी के आइडियाज कुछ और होते हैं और किसी के आइडियाज कुछ और होते हैं. तो पॉसिबिलिटीज कहाँ जाती है कि हमारे थॉट्स क्या होते हैं, मैच नहीं कर रहे होते हैं. ये क्या होता है, हमारा स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन में डिसएडवांटेज होता है. सेकेंड, वी आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन. पब्लिक ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? पब्लिक क्या हो सकता है? देयर कैन बी 100%, देयर कैन बी 200%, देयर कैन बी 300%. possibilities is there that there are 400, 500, 600. The public is public. It doesn't matter the number of public, but what is happening in the public? Can we communicate with these 100 people? Can we communicate with this 1000 people? Can we communicate with this lakh people? नहीं. हम उनकी बात का फीडबैक लेकर उनको साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते. बट क्या हो सकता है,
जब भी हम कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स कोई ऑडिटोरियम है, उसमें नंबर ऑफ पीपल बैठे हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं, उस मीटिंग को ऑपरेट कर रहे हैं, लोग हमें सुन रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पब्लिक ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा। इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम लोग पब्लिक ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। ना कि वो थाउजेंड्स ऑफ पर्सन हमारे साथ में बैठे हैं और हम भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, हम नहीं हो सकता, हम हर एक पर्सन का पर्सनली फीडबैक नहीं ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पब्लिक ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा। पब्लिक ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं? पब्लिक ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन हमारे कॉन्फिडेंस को और इन्हेंस करता है, हमें नई लर्निंग देता है, हमें नए आसपास के नए एटमॉस्फेयर को अडप्ट करने का क्या देता है, एक एक्सपीरियंस देता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, पब्लिक ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक ग्रुप कम्युनिकेशन, थॉट्स में बी वेरी सेम एज स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन, कि हमने जो वक्ता है, मीन्स जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, वो पॉजिटिव बोल रहा है, बट देयर इज पॉसिबिलिटी इन द ग्रुप ऑफ 1000 पीपल देयर इज वन पर्सन हु इज टेकिंग इट नेगेटिव। सो द you cannot satisfy all the people in the group, but you are trying to be do the good, and you are doing the good, you will be, but their exception are there. Okay, so these are the advantages and disadvantages of small group communication and public group of communication. Now, what are the types of non-verbal communication? We can say that elements of non-verbal communication. What are the elements of non-verbal communication? Posture, hand gestures, haptics, proxemics, एंड द लास्ट वन इज क्रॉनिक्स। अब क्या होता है, ये इनका मीनिंग्स क्या होते हैं? सबसे फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द गेस्चर, द मूवमेंट ऑफ योर हैंड्स इज नोन एज अ गेस्चर। फर्स्ट, posture, how you are sitting, how you are standing, how you are representing, this is known as the posture. What is happening? The way you sense, means the way you are touching, like you are holding the hand tightly, that means that you are aggressive, that you are angry, that this means haptics. Haptics, what is haptics? Haptic is representing by the sense of touching. This is also a type of non-verbal communication. Second, what is proxemics? The closeness of the interpersonal communication, means in the I previously in the previous class told you about the interpersonal communication. In interpersonal communication, the communication happens between two people, two close people, just like father and son, brother and sister, and mother and father. This is known as the interpersonal communication. It can be your friend, it can be your teacher. The one individual who know your thoughts is known as the interpersonal communication. The space between interpersonal communication is known as the proxemics. Second, how your pitch, your vocal tone matters in non-verbal communication. This is also a type of non-verbal communication. Last, phonics means how you are, how what gap you are taking between your sentence is known as the chronics. Means मैंने फर्स्ट वर्ड बोला, 2 सेकंड ब्रेक लिया, शांत, फिर मैंने सेकंड वर्ड बोला, 2 सेकंड ब्रेक लिया, शांत। दिस ब्रेक is known as the chronics, means how you are taking the gap between your sentence, your word, your letter is known as the chronics. This is all about your chapter 1, methods of communication. We are starting our unit from the beginning, that is unit 1, communication skill. In communication skill there are many chapters related to the communication. We covered all the topics in our previous class finally, and this is our last class of communication skill, and the communication skill second. From the next session we will meet with the new chapter and the new content. तब तक के लिए thank you and goodbye to all.